Namaskar, I'm Deepthi the Wanderer. I dare you to explore nature like a naturalist. Here we have campers from Delhi Public School, Guwahati, trying to survive in wilderness by making their own shelter, trying to build up their own fire to cook their food right in the forest of Dudhwa. Do dare to do so? If yes, come and join us National Environment Science Camp at Dudhwa Tiger Reserve. The theme for this year at the camp is Kaleidoscopic World. As jungles have a kaleidoscopic beauty, simply by twitching our angle of vision, we can get to see newer treasures. Come, let me take you for a drive, a long drive through the dense Sal forest at Dudhwa. Sitting in an open gypsy and moving on a jungle track stands any traffic, flagged on both sides by tall palm trees, competing with each other to reach the sunlight. The cool breeze that caress your face and the smell of forest is just amazing. This is the actual pleasure of a real long drive. One only come across curious denizens of Dudhwa, spotted deer, hog deer, wild boars, birds, blue bulls, and if you are lucky, the king himself might decide to come. Dudhwa is famous for its wetlands. Here I am perched on a machan at Jhadi Tal, just 5 kilometers from the camp. It's morning time and the swamp deer are returning back from the forest. They are slowly emerging from the grasses and will laze around here whole day munching on the grasses. Dudhwa is one of the last habitats of the Barasingha or the swamp deer. These wetlands are also winter home to the migratory ducks. There are vast stretches of grasslands at Dudhwa, exploring them together on foot is an amazing experience. Rivers Suheli, Sharda and Mohana water the forests of Dudhwa. Here we have a huge crocodile slithering in the river after basking in the sun. चलो कुछ तो दिख गया सर बोनी हो गई In the National Environment Science Camp this year, we focus on Kingdom Animalia, the insects, the birds and the mammals. Insects are the most diverse of the life forms. 7,50,000 species have been documented so far. They will continue to survive on the planet Earth long after man is extinct. Here we have the master of disguise, the stick insect, which is perfectly indistinguishable from the twig it sits upon. India is blessed home to some 1200 species of birds. Humans have always envied birds because while birds could fly, humans could not. And because of the sheer effortlessness of the bird's flight, we refer to them as unmatched
aviators. Here you can see we have thousands of swifts perched on the electric wire near the camp. The way they fly together in a flock is unmatched. Mother Nature has perfected the anatomy of predators for hunting and also well equipped the prey for their survival. Here we have a large herd of spotted deer suddenly alarmed and run. They have excellent sense of smell and sinuous leg muscles to escape the clutches of predators. Dear students, despite lot of effort, the forest of Dudhwa is under great threat due to number of factors. We have identified some critical problems and thought of solutions. We dare you to help us implement the solutions and contribute to the conservation of Kingdom. National Environment Science Camp is about fun, adventure and discovery. They pitch sturdy jungle tents. Here we have Rakesh and Sati pitching a tent for you. ठीक से करते ग्लू दोहरा ऊपर से सर थोड़ा खींचिए। ये लोकेश जी, ये जो टेंट्स हैं इनको लगाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। कितना समय आपको लगता है ये सब टेंट लगाने में? नहीं, टेंट लगाने में समय तो लगता है, पर हम लोगों को आदत में आ गया तो हम लोगों को मुश्किल नहीं होता है, बाकी तो समय तो लगता ही है। और इनका रख रखाव, और जब तेज हवा आती है तब आप कैसे जो है करते हैं? नहीं, इनको हम इतना टाइट बांधते हैं। देखिए यहाँ से बैम्बू का बांध रखा है, बैम्बू से बांधा है ना। नीचे से ये सारे पाए का है पैक कर रखे हैं। अच्छा अच्छा। और इसको इतना टाइट हमने बांध रखा है इतनी मोटी मोटी रस्सियों से। हाँ हाँ, कि इनको कोई फर्क पड़ता है। तो सतीश, ये जो टेंट हैं ये क्या बच्चों के लिए सुरक्षित हैं? बिल्कुल, बहुत सुरक्षित। चाहे जितनी आंधी आ जाए, हाँ, फटते नहीं हैं। अच्छा, गिरते हैं। अच्छा, आराम से बच्चे सो सकते हैं रात में। हाँ, जितनी में आंधी आ जाए। और बच्चों को इन टेंट्स में बड़ा मजा आता है। मजा आता है, बड़ा मजा लेते हैं बच्चों टेंट में, तो खेलते हैं तो आराम से। और टेंट में सोने में उनका एक बड़ा आनंद रहता है क्या? आनंद आता है ना। बढ़िया। तो लोकेश जी, बच्चे जब जाते हैं तो आपसे क्या कह के जाते हैं? हम बच्चों को पहली बार तो जाने का मन ही नहीं करता है। हाँ। वो कहते हैं कि सर अगर एक रात और मिल जाए रुकने को तो सबसे अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा मजा आता है टेंटों में रहने में, जंगल देखने में मुझे मजा आता है। बढ़िया। स्टूडेंट्स, आई डेयर यू टू कम एंड पार्टिसिपेट इन द नेशनल एनवायरनमेंट साइंस कैंप एट दुधवा टाइगर रिजर्व। Do you dare? बाप रे। Students, I dare you to come and participate in the National Environment Science Camp at Dudhwa Tiger Reserve. Do you dare?